Ananya, in fact, the other जस्टिस नहीं, उन्होंने उस कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को जारी करने का फैसला नहीं करा है, उन्होंने उस जजमेंट को रद्द करने का फैसला करा है और उन्होंने जस्टिस धुलिया साहब ने इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस धुलिया ने इसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने वो जियो जो था कर्नाटक गवर्नमेंट का उसको उन्होंने क्वाश करा है और उनके जो आधार हैं वो 3 इंपॉर्टेंट आधार हैं। एक तो बिजॉय मैनुअल का जजमेंट है। यहाँ हो रहा है ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, हिजाब पहनने पर पाबंदी की बात नहीं हो रही है। पाबंदी की बात कर्नाटक सरकार से जब उठी तो इस बात पर उठी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब का और हमारे ना एजुकेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। हिजाब एक अलग चीज़ है और एजुकेशन एक अलग चीज़ है। सो हमें इन दोनों को मिलाना नहीं है। हमारा जो है हिजाब हम ओढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं, कोई एजुकेशन में कोई रोक नहीं सकता हमें, क्योंकि ये हमारा हक है, फंडामेंटल राइट है ये हमारा, तो कोई रोक नहीं सकता है हमें। Well, those are the different reactions that we are getting you from across the country. That big verdict from the Supreme Court of India, it's a split verdict. What does that mean? It means that the Karnataka High Court judgment, which was there earlier, is good in law. Here are the key takeaways. This is what happened exactly at the Supreme Court of India. So there is no end to the hijab stalemate. The matter will continue. A larger bench will be formed. The quorum is likely to be of 3 or more judges, depending on what the Chief Justice of India decides, as and when that really happens. So legally speaking, from the Supreme Court, there is no closure to the matter as of now. Once again, the matter will go on. As I said earlier, the judges have given a split verdict. It usually happens when there are 2 judges on the bench and both of them don't agree on a legal position. Here, they have not agreed on all the 11 questions. What prima facie seems to be, written copy of the order judgment is still expected. Justice Gupta has scrapped the petition. He was one of the judges who believed that the Karnataka High Court and what it said was right and the government notifications are good in law. Justice Dhulia, he has scrapped the government order and he has said Bijoy Emmanuel, a case. In that case, what position was taken, which is to protect the individual liberty of an individual, that is the right position. And there is no need to venture into the essential religious practices test. That's what Justice Dhulia has said. So Justice Dhulia and the other judge on the bench disagree. I want to cut across back to Ananya, who's with us on the broadcast. Ananya, for the benefit of our viewers, take us through the 11 questions that were formulated by the court. We're awaiting the order copy, the judgment copy to come out from the Supreme Court of India. But broadly speaking, what were the key arguments on which the hearing really happened? And I remember talking to you about this, which is that earlier the argument was largely on the essential religious practices test, but the petitioners did shift their position and say, this is about individual liberty. We are protected under the Puttaswamy judgment. Well, definitely, Anusha, we've been talking about this for a very long time. You have been there when the arguments had also taken place into this particular case, while the Karnataka government has tried to defend its GO, that's the government order. In fact, now what is very, very clear at this moment of time is that the judgment is now going before a large bench of this court. And what is a very, very clear opinion at this moment of time is that both the judges have given out a concurring opinion. So when the larger bench would be considering it, would be considering both of the opinions. Both of the sides of this judgment could be actually be referred by the larger bench when it hears the matter, and it would come be back very, to very you. crucial. There's a press conference happening. Let's go to that. नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने कुछ चीज देखी है। तो अब तो मतलब अब तो सीजीआई करेंगे फैसला। यस, मतलब नहीं, अब सीजीआई तो नहीं करेंगे फैसला। अब तो इस पूरे मामले में मतलब आप लोग अब आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि एजुकेशन के रास्ते में हिजाब को लेके कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए और जस्टिस धूलिया ने भी ये स्टेटमेंट दिया है अभी कि हिजाब जो है वो एजुकेशन में कोई भी बाधा या रुकावट नहीं डालता है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं स्टेटमेंट को और इसका तालियों के साथ स्वागत करते हैं कि मतलब जो स्प्लिट वर्डिक्ट है उसको लेके भी इनका कहना है कि मतलब आप किस बात का स्वागत कर रहे हैं? ये तो वर्डिक्ट तो स्प्लिट है, अब बटी हुई है। जी, लेकिन एटलीस्ट कोई स्टैंड ले रहा है कि हिजाब जो है वो हमारे एजुकेशन में कोई भी रुकावट नहीं डालता है। हम लोग हिजाब के साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे क्योंकि हिजाब जब हम लोग हिजाब पहनते हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करते हैं, हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं और हमें नहीं लगता कि हमारे हिजाब पहनने से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर एजुकेशन पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ये देखिए हिजाब का समर्थन करती हुई भोपाल की लड़कियां।
split verdict